in the name of Allah, the most gracious, most merciful. So in the previous video we talked about could versus would. So I hope you learned that very well. So in this video we are going to talk about should versus must. So if you want to learn should and must with different uses, go with us. Okay. So I'm going to discuss all these things in Pashto as well as a little bit Urdu. So if you're interested, continue watching this movie after the very end. So that will help you a lot. Okay, coming to should. We use should for advice. Should among the advice the for istimal ho sayda. Like for example, you should upper the prayer on time. आपको नमाज वक़्त पर करना चाहिए. You should not tell a lie. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. पता तरीके से हम द should use को से शो द एग्जांपल को सु रही we should eat rare fruits. ओके, हमें पक्का हुआ फ्रूट खाना चाहिए. मंगला पाखा फ्रूट खल पकार दी सही शो मतलब शने दी पकार. दूसरा नंबर एग्जांपल तो को रही you should stop smoking. आपको सिगरेट नोशी बंद करना चाहिए. सही शो नो द एडवाइस द बार बदामंगा यूज को सही शो. Khaji, on the other hand, the must use basanko must use obey the law and the written rule. Didi the bara manko seshwa the qanun chimanga taabedari ko no bada ki bada manga use ko seshwa. Like for example, people must follow the traffic rules. Seshwa लोगों को traffic rule पर अमल करना चाहिए. सहीशवा नो द सेंस के बदा समसरा यूज की सहीशवा. Yeah, you must be 18 to watch this program. सही शो मतलब 18 दाज़ मुंसा यो खास लिमिट रो सही शो दगन फ्लस देनो आले बता program शेकतरे otherwise you don't watch this program. नो पता सेंस के बदा मुंसा यूज की. बल एग्जांपल दो गोरी you must not tease the animals. आपको जानवर तंग नहीं करना चाहिए. दा जुमला अक्सर कचड़िया गुरु के लिए गिदी भी ची यू मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स. आपको जानवर नहीं तंग करना चाहिए. सही शो न बदा सेंस के बदा यूज की. सही शो द ओबे द लॉ एंड रिटन रूल से बदा जम से यूज की. सही शो पदी की बे कंपैरिजन का सही शो मतलब दा वता सा अख मेमोराइज की. सही शो मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी तो उनकी. सही शो ओम पे दी जाने जाने यूज हम शे को लख दी कंपैरिजन किंदे दी की पैदा दा कीगी चगा स्केच आइडिया बस्ता जिन तड़े पासाने से रही. सही शो खजी उस राजे शुड था द शुड जम सर दो यूज शे दे ऑब्लिगेशन और द रिस्पांसिबिलिटी द बार बदा यूज की. सही शो द ताबेदारी द बार बदा यूज की. सही शो लाइक वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. सही शो लगा दा मंगा यो रिस्पांसिबिलिटी द कना हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए. मंगलत मशरान इज्जत कवल पकार दी. लेकिन वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडीज पीपल. ओके, हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए. नफो रिस्पांसिबिलिटी सरवा यूज की. सही शुड खजी मस्ट बहुम द रिस्पांसिबिलिटी सर यूज की. खुदा बच्चे भी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन या स्ट्रांग रिस्पांसिबिलिटी सर यूज की. बदी के बजोरना लगजियात है. सही शो द शुड पर निस्बत. लाइक फॉर एग्जांपल यू मस्ट नॉट कट द ट्रीज. आपको दरख्त नहीं काटना चाहिए. ताला बूटी कट कवल नदी पकार मतलब पति के जोर ना एम्फेसाइज लगजियात है. सही शो शुड के नहीं स्ट्रांग ऑब्लिगेशन दोबारा बता यूज की. दो नंबर एग्जांपल दो गोरी वी शुड क्लीन आवर मास्क. सही शो हमें जुमात साफ करना चाहिए. मंगला जुमात साफ कवल पकार दी. सही शो मतलब पदे की पॉसिबिलिटी छे दे सरा स्ट्रांग. सही शो मतलब पदे की इंटेंस छे दे ज्यादा दे. हां खजी द शाते की द कुड जम सर ड्रीम यूज छे दे द रिकमेंडेशन द पार यूज की. सही शो रिकमेंडेशन मीन तजवीज. सही शो खुदा बजम सरा द मस्ट पर निस्बत बाले लकम यूज की. सही शो मतलब मस्ट की वजह न लग ज्यादा द स्ट्रांग रिकमेंडेशन द पार यूज की. गदा बताओ simple recommendation the Paris. Like for example, you should stay here. ताला दल ता पाते के दल पकार दी. दूसरा नंबर एग्जांपल तो कोई you should read my book. आपको मेरी किताब पढ़ना चाहिए. नदाज मुसलसल पाराजी recommendation द पाराजी तजवीज द पार. या बल एग्जांपल पे के वाले you should
रीड इमरान खान बुक, आपको इमरान खान बुक पढ़ना चाहिए। तो बता सेंस के बता जरूर सरा यूज की सही शवा मस वाले ज़रा पार यूज की दावत स्ट्रांग रिकमेंडेशन द पार यूज की सही शवा मतलब पदे के बाद एम्फसाइज तजवीज में पदे के मन ज्यादा वर्क हो सही शवा जोर ना हो कि ज्यादा भी लाइक फॉर एग्जांपल यू मस्ट स्टे एट होम ड्यूरिंग द कोविड-19, आपको कोरोना वायरस के दौरान घरों में रहना चाहिए सही शवा दाज में शो स्ट्रांग रिकमेंडेशन शो मतलब पदे की एम्फसाइज ज्यादा दे। दोम नंबर एग्जांपल दो गोरी इफ यू गो टू इस्लामाबाद यू मस्ट विजिट फैसल मस्जिद, अगर आप इस्लामाबाद गए तो आपको फैसल मस्जिद जाना चाहिए। तो मतलब पदे की रिकमेंडेशन शेरे ज्यादा दे सही शवा मतलब बात जरूरत है विजिट पर का इस्लामाबाद ता लाड़ी सही शो और दा इट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीकर सही शो दा स्पीकर पर डिपेंड की सही इट्स की ची रिकमेंडेशन ज्यादा और कौन पाजी की दी मस्ट यूज के तो कम की ची रिकमेंडेशन कम होना पाजी की दी शुड यूज के सही शो इट्स योर चॉइस इट्स ऑल अप टू यू। हाजी फ्लोरम नंबर यूज हम सर द शुड यूज फॉर अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन बादाम तशो के सही शो like for example the weather should be nice, the weather should be nice nice, the weather should be nice tomorrow सही शवा नो कल मौसम अच्छा होना चाहिए सही शवा मतलब अच्छा होगा दावत द फ्यूचर प्रेडिक्शन है सही शवा या it should be ready soon पता सेंस के बाद हम सरा इस्तेमाली की सही शवा बल एग्जांपल पके वाले ही शुड कम नेक्स्ट वीक ओ अगले हफ्ते आएगा द फ्यूचर प्रेडिक्शन सब मंगा द शुड यूज को सही शवा खजी बल जमन सरा द मस्ट यूज शेदे मस्ट का जरा पर इस्तेमाली की इज अ नाउन बता जमन सर इस्तेमाली की सही शवा लगा पासपोर्ट इज मस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अब्रॉड सही शवा मतलब बाहर मुल्क के सफर के नो पासपोर्ट बच्चे भी जरूर विशेष अंदाज में सरा इज अ नाउन इस्तेमाल की या इंग्लिश इज मस्ट व्हाइल वर्किंग इन यूएसए मतलब इंग्लिश में जरूरियात भी तब यूएसए के कार के खजी द शुड जमन सरा यू बल यूज दे टू से थैंक यू शुड ममंग सदा पार इस्तेमाल हो कने चमंग चाहता थैंक यू आयु से शोदा मा मस्ट भी करे होदा शुड पकार दे से शवा like for example he gave me watch बेचो तब जवाब के मंगो oh bro you shouldn't that आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सही शो मतलब ताला दालू पका मतलब से भी डेरा डेरा मेरा बानी सही शो उन पता करते हैं कि मंगा the should use को सही शो you the should बस सर इस्तेमाल हो the thank you the पारबा इस्तेमाली खजी देता बिया लग वक्त शही शुड में सर पार इस्तेमाली की द एडवाइस द नसीहत द पार इस्तेमाली की चार से मंगा एडवाइस को नसीहत को अंदर द पार मंगा शुड इस्तेमाल हो लाइक यू शुड ईट रेड फ्रूट वी शुड स्टॉप स्मोकिंग यू शुड नॉट टेल अ लाई यू शुड स्पीक लाइक यू शुड अपर द प्रेयर ऑन टाइम वगैरह वगैरह सही हुआ हाजी मसबर सर पार यू ओबे द रिटन लॉ एंड रूल्स द रूल्स ऑफ द बेटर रिटन लॉ से बता मंग इस्तेमाल हो लाइक मतलब you must be 18 to full oats मतलब तब आतल उस काली नाले बा उठ पुल के या you must have caught to pull the oat सही जो मतलब सा सब काट जरूरी चिता उठ पुल के तो बदला सेंस के बदामंगा यूज को मतलब कम जैसे सरा रिटन लावा या उबैद लावा सही शो या रिटन रूल या उबैद लावा सही शो रिटन रूल तास अक्सर द रूडुनो माने ढेर ज्यादा पर नजर बनाई सही शो लगा मसलन यू मस्ट स्टॉप हियर आपको यहाँ रोकना चाहिए सही शो मतलब जोर हो गया सही शो हाँ जी एग्जांपल दोस्तों को पीपल मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए और यू मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स आपको जानवर तंग नहीं करना चाहिए खजी दगा शांत की ड्रीम यूज दमन सरा द शुड बद ऑब्लिगेशन द पाराजी और मस्ट बद सो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन द पाराजी सिंपल दैट की से शुड बद सरा पाराजी ऑब्लिगेशन द पारा और मस्ट बद ऑब्लिगेशन द पाराजी खुदा बद स्ट्रांग ऑब्लिगेशन और रिस्पांसिबिलिटी द पाराजी से दगा शांत की शुड बद सरा पाराजी रिकमेंडेशन द पारा
must بل څه د پاره strong recommendation د پاره صحیح شو دا به پتا باندې ډیفینډ کوي چې should use کې نو مطلب دې کې recommendation لکم ورکې صحیح شو او چې must use کې نو obviously recommendation بس شي زیات وي دا شرط کې should به موږ د future prediction خو صحیح شو او لکه for example he should be here tomorrow صحیح شو نو مطلب هغه سبا دلته وي نو دا زموږ سره د فیوچر څه شو یو پریډکشن شو یو امکان شو یو پیشن گوئی شو صحیح شو حاجی must زموږ سره بل څه یوز کیږي must is a noun به دا زموږ سره یوز کیږي صحیح شو لکه passport is must while traveling in abroad صحیح شو ته چې بار ملک کې سفر کوي نو تاسو پاسپورت ضرور وي صحیح شو بل زموږ سره should د صدا پار یوز کیږي to say thank you مطلب تاسو هم مخکې ویل چې کسلا ګپ در کی الله ساتر چې راوړي یا الله غړې راوړي او ته وي چې لکه تعالی خدا نو کول پکار صحیح شو نو یو shouldn't that صحیح شو आपको ये नहीं चाहता صحیح شو نو you shouldn't that or non you shouldn't that or Luqman you shouldn't that or bro you shouldn't that نو بدل اسه کې بس موږ سره د should use کی so I hope you learn these two modal verb very well should versus must. Thank you so much.